Good morning, students. Yesterday we discussed about the poem Noble Nature. Due to Corona, you are on leave from 14th of March. This is a crisis not only for us but for whole entire world. In order to win the battle of Corona, we must be determined that we will win this fight against Corona. In order to compensate your study, Surya School has decided to start online classes again from 15th of June. So this is very important time for you. Utilize your time and stay home, stay safe, and follow the advisory which has been instructed by the government. Today we are going to discuss question and answers of the noble nature. Noble nature के बारे में yesterday बताया था. The poet has drawn two examples from nature. Oak tree. ओक ट्री के बारे में कहा गया है, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। इसी प्रकार से जीवन में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना आयु तो लंबी जीते हैं, लेकिन अपने लंबी आयु काल के दौरान कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं, कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं करते हैं कि लोग उनको उनकी मृत्यु के बाद याद रखें। तो यहाँ पर कवि ने ओक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि ओक का पेड़ क्या होता है। इट लिव्स फॉर 300 years बट इट इज़ ऑफ नो यूज़ व्हेन इट फॉल्स डाउन लाइक ए लॉग विदाउट लीव्स। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ओक ट्री। So the poet wants to emphasize on the fact that we should not live like a oak tree, we should live like a lily. Lily is a beautiful flower which impresses us with its beauty. It pleases us. It is very beautiful to see. So here are some questions. We are going to discuss the questions. You have to write down the question and answers in your notebook, and you must utilize your time, because in the month of July the same situations can be. If schools are open, you are most welcome. So first question, what symbols does Ben Jonson draw from nature? कि नेचर से, प्रकृति से कवि कौन से दो उदाहरण लेता है जिसका बेस अपनी कविता में बनाता है। He has drawn two examples from nature. One is oak tree and second one is lily. Mention the qualities of an oak. एक ओक के पेड़ की, बलूत के पेड़ की विशेषताएं क्या होती हैं। ओक ट्री, it lives for 300 years. It lives for 300 years and it falls like a log of wood at last. Dry, सूख कर गिर जाता है। Bald, without leaves and sere, withered, मुरझा जाता है, बिना पत्तियों के हो जाता है। ये हालत हो जाती है और इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, कि एक दिन के जीवन काल में लिली हमें प्रभावित कैसे करता है। ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी, बाय इट्स ब्यूटीफुल साइट, बाय इट्स फ्रेग्रेंस, अपनी सुगंध से भी प्रभावित करता है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। According to the poet, human lives can be perfect if it is full of
achievements, heroic deeds, noble work. No matter it is short, but it should be full of heroic deeds, achievements. How does the poet juxtapose two objects of nature with human life? कि प्रकृति के दो उदाहरण लेकर वह मनुष्य के जीवन से किस प्रकार से तुलना करता है, उसको जांचता है. तो the theme of the poem suggests that poet compares long and meaningless life of oak with long and meaningless life of human being. There are many human beings who lives 300 years or long life, but they don't do any noble work in their lives. And there are some persons who lives a very short life, but their short life is full of heroic deeds, achievements, noble works. Just like the life of lily. A lily is a western flower which blooms in the daylight, but in the night it falls down, it dies. In the same way, there are persons who lives a very short life, but in their short life they do many noble works, they get many achievements. Thank you, have a nice day, and remember, stay home, stay safe. Thank you.